Hello students, मैं BL Sharma Maths discussing exercise 12.2 of the chapter 12, that is surface areas and volume, class 10th mathematics, and this is from the NCERT book. मैं BL Sharma Maths. The question is on your screen. Question number 1. A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii, plural of radius is radii, being equal to 1 centimeter, and the height of the cone being equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. देखिए ये एक कौन है, ये स्टैंड करता है एक हेमिस्फेयर पे इस तरह से, एंड इट इज गिवन द हाइट, जो इनका हाइट है, दिस हाइट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, एंड रेडियस इज इक्वल टू हाइट, मीन्स रेडियस एंड हाइट बोथ आर इक्वल. So you can say the radius of hemispherical part, that is 1 centimeter. That is 1 centimeter. Radius of conical part, that is also 1 centimeter. ये कॉन और इस हेमीस्फेयर दोनों का रेडियस सेम है, एंड दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. एंड हाइट of conical part, that is equal to 1 centimeter, that is also 1 centimeter. It is given in the question. And now we have to find out the volume of this solid. It is made of a cone and hemisphere. So volume of solid means volume of conical part plus volume of hemispherical part. And we know that volume of cone, that is given by 1 by 3 pi r square h, and volume of hemisphere, that is 2 by 3 pi r cube. h आपके पास है, r आपके पास है, पाई का टर्म में ही आपको आंसर देना है. सो पुट द वैल्यूज. h इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. सो 1 by 3 pi r square h plus 2 by 3 pi r cube. 1 by 3 into a radius is 1 into 1 in height is also 1 plus 2 by 3 pi, radius is 1 into 1 into 1. Put the values. So it is 1 by 3 pi and this is 2 upon 3 pi. दोनों को ऐड करिए. 1 by 3 pi plus 2 upon 3 pi, that is 1 pi centimeter cube. And that's all for this question. So the volume of this solid, which consists of the hemisphere and this cone, that is pi centimeter cube. Question number 2 on your screen. There is a model shaped like a cylindrical with two cones attached it at its two ends. देखिए ये सिलेंडर है और उसके दोनों एंड पे कोन अटैच्ड है, this side and this side. It is also given the diameter of the model is 3 centimeters. This is diameter is 3 centimeter, means the diameter of the cylindrical part and diameter of conical part both are equal to 3 centimeters. So what will be radius? And the total height here means here to here, that is 12 centimeter. And the height of the conical part is 2 centimeter. So this is 2 centimeter and here this is also 2 centimeter. So the height of the cylindrical part will be 12 minus 4 centimeter, means that is 8 centimeter, means this is 8 centimeter. And it is also already given the radius of cylindrical part, that is equal to 1.5 centimeter. Radius of conical part, that is also 1.5 centimeter. So you can mark this is radius 1.5 centimeter. And the height of conical part, that is 2 centimeter. This is 2 centimeter, this side, and this side also 2 centimeter. क्योंकि दोनों तरफ कॉनिकल पार्ट का एंड है यहां पे. देखिए हमें अब टोटल वॉल्यूम चाहिए. What is the volume? Find the volume of air contained in the model. So the volume
दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लेस ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए कॉन। एक कॉन का वॉल्यूम निकालिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि यहां पे 2 कॉन्स हैं, दिस साइड एंड दिस साइड। यूज फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दैट इज pi r square h, एंड वॉल्यूम ऑफ ए कॉन दैट इज 1/3 pi r square h। यहां पे हमने हाइट ऑफ सिलेंडर h लिया है, दैट इज 8, और ये हमने स्मॉल एच से रिप्रेजेंट किया हाइट ऑफ कॉन, दैट इज 2 सेंटीमीटर। सो यू कैन राइट फर्दर, pi into radius is 1.5 into 1.5 into height, that is 8, plus 2/3 pi, that is radius, that is 1.5 into 1.5, but height of cone, that is 2 centimeter. Calculate and get your answer. 18 pi plus 2 into 1.5 pi. That is 18 pi plus 3 pi. 18 plus 3, that is 21 pi. So 21 into, in place of pi, you can put 22/7. So 7 ones are 7, 7 threes are 21. So that is 66 centimeter cube answer. That's all for this question. Very important question. And the question says, a gulab jamun contains sugar syrup up to about 30%. जो गुलाब जामुन में शुगर सिरप होता है, इसको चाशनी कहते हैं, that is 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical end. गुलाब जामुन का जो शेप है वो सिलेंडर है जिसके दोनों एंड पे हेमिस्फीयर है, विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। इसको हम विजुलाइज करते हैं, देखिए ऐसे। ये बीच का जो पोर्शन है वो सिलेंड्रिकल पोर्शन है गुलाब जामुन का, देखिए यहां देखिएगा ये रहा, और उसके दोनों एंड पे हेमिस्फीयर्स ऐसे ऐसे। क्या गिवन है? द टोटल लेंथ ऑफ गुलाब जामुन दैट इज 5 सेंटीमीटर। इट इज ऑल्सो गिवन the radius of the part is 1.4 centimeter because diameter is 2.8 centimeter. That is why radius is 1.4 centimeter, and radius of hemispherical part, that is also 1.4 centimeter because radius is diameter upon 2. And so you can say that is 1.4 centimeter. This is also 1.4 centimeter. This is also 1.4 centimeter. It is also given that height of the cylindrical part, देखिए सिलेंड्रिकल, केवल इतना सिलेंड्रिकल, ये सिलेंडर यहां से लेके यहां तक देखिए, टोटल इज 5। 5 में से लेस करिए 1.4 एंड 1.4, दैट विल बी 2.8। सो 5 minus 1.4 plus 1.4, that is 2.2 centimeter. Cylindrical part only, this part, here to here. Means this. That is 2.2 centimeter. द टोटल वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, पहले वन गुलाब जामुन फाइंड आउट करेंगे, फिर 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, फिर शुगर सिरप का कंटेंट, कितना शुगर सिरप है उतना फाइंड आउट करेंगे। देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस टू ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फेरिकल पार्ट, क्योंकि दो हेमिस्फेयर है, दिस वन एंड दिस वन। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, that is 22/7. Radius is 1.4 into 1.4 into 2.2 because the height of the cylinder, that is 2.2 centimeter.
That is 13.55 centimeter cube. Now, volume of two hemispherical part means twice of volume of one hemisphere, that is 2/3, that is equal to 4/3 pi r cube. एक पूरे स्पेयर का वॉल्यूम का इक्वली हो गया है. That is 4/3 in place of pi, put 22/7. In place of radius, put 1.4 into 1.4 into 1.4. On calculating, we get 11.50 centimeter cube. Add कर दीजिएगा. So the total volume of one gulab jamun, that is 13.55 plus 11.50, that is 25.05 centimeter. एक गुलाब जामुन है ये. We need how many gulab jamun? 45 gulab jamun. So total volume of 45 gulab jamuns, that is equal to 45 into 25.05. On calculating, we get 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब. एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है ये. अभी हमने 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया है, 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब. लेकिन हमें शुगर सिरप चाहिए, एंड दैट इज 30%. टोटल वॉल्यूम का जो इसका जो वॉल्यूम है उसका 30%, इसका वॉल्यूम का 30% हम फाइंड आउट कर लीजिए, दैट विल बी आंसर. So the sugar syrup, that is 30% of the total volume. So 30% of 1127.25 centimeter cube, that will be equal to 30 upon 100 into 1127.25. Calculate करिए, that is 338.175 centimeter cube. And that's all for this question. This question is very, very important. Oh, very good question. A pen stands made up of wood is in the shape of a cuboid with four conical depressions to hold pens. पेन रखने के लिए हमारे पास एक पेन स्टैंड है, उसमें फोर कॉनिकल डिप्रेशंस है. देखिए कैसे. ये क्यूबॉइड है. यहां से डिप्रेशंस हम आउट करते हैं, देखिए ऐसे. एक डिप्रेशन हमने कॉनिकल डिप्रेशन है पेन रखने के लिए, दिस इज पेन स्टैंड. लेकिन ऐसे चार कॉनिकल डिप्रेशन है. वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री एंड दिस इज फोर. हमें रिमेनिंग पार्ट है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. मीन्स हम रिमेनिंग पार्ट का मीनिंग ये हुआ कि द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस द वॉल्यूम ऑफ दीज फोर कॉनिकल डिप्रेशंस. सो वी कैन से वन कॉन, ये पेन स्टैंड है, मैं बना दिया ऐसे. ये कौन बन गए, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, इट इज लाइक दैट. So volume of a cuboid is given by L into B into H, and volume of cone, that is the formula, that is 1/3 pi r square H. Volume of cuboid, that is length into width into height. So volume of cuboid, that is 15 into 10 into 3.5. On calculating, that is 525 centimeter cube. पूरे क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है इतना है. इसमें से हमें ये चार कॉन्स हैं, इनकी वॉल्यूम को सबट्रैक्ट करना होगा, लेकिन पहले फाइंड आउट करेंगे. गिवन रेडियस, दैट इज 0.5 सेंटीमीटर.
ये रेडियस यहां से यहां तक, दैट इज 0.5 सेंटीमीटर, एंड इट्स डेप्थ मीन्स हाइट, that is 1.4 centimeter. So what is volume of four conical depressions? Means 4 into volume of one cone. ये वन कोन का वॉल्यूम फाइंड आउट किया, 4 से इसलिए मल्टीप्लाई किया बिकॉज वी आर हैविंग हाउ मनी वी आर हैविंग 4 conical depressions. You have radius, you have height, find out. 4 into 1 by 3 into, in place of pi put 22 by 7, in place of radius 0.5, in place of height 1.4, and calculate. That is 1.46 centimeter cube. Subtract and get answer. That is why the volume of wood in the entire stand, that is volume of the cuboid minus 4 into volume of one conical depression. That is volume of cuboid we already have calculated, and volume of 4 conical depressions we already have calculated. That's your answer. This question is very, very important. A vessel is in the form of an inverted comb with height 8 सेंटीमीटर. एक इन्वर्टेड कॉम है, उसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है. ये देखिए हमने इन्वर्टेड कॉमा बनाया और इसकी जो हाइट है दैट इज टोटल हाइट मींस ईयर टू ईयर दैट इज 8 सेंटीमीटर. एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विथ दिस रेडियस इज 5 सेंटीमीटर. अब इसमें क्या करते हैं, इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम, यहां तक इसको पानी से भरा जाता है, मीन्स कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर. अब इसमें से कुछ लेड शॉट्स जो स्पेरिकल होते हैं, रेडियस इज 0.5 सेंटीमीटर, ड्रॉप किया जाता है. जैसे आप ड्रॉप करेंगे जो वाटर फ्लो आउट होगा, बाहर बह जाएगा. ये देखिए लेड शॉट्स है, यहां तक. ये हमने इसमें ड्रॉप किया और जैसे ही ड्रॉप किया तो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट. ये जो लेड शॉट्स है, मैं थोड़ा सा इसका इन सेट में थोड़ा बड़ा फिगर बना देता हूं. ये जो लेड शॉट है स्पेरिकल है, उसका जो रेडियस है दैट इज 0.5 सेंटीमीटर, एंड द रेडियस ऑफ conical vessel that is 5 centimeter, and its height is 8 centimeters. ये कंप्लीटली हमने इसको विजुलाइज किया है. बताना यह है कि कितने लेड शॉट्स डाले डाले हम, इस कितने स्पेरिकल लेड शॉट डाले हैं कि 1/4 जो पानी है वो बाहर बह गया है. द क्वेश्चन इज दिस. सो वॉल्यूम ऑफ अ स्पेयर, द फॉर्मूला इज गिवन 4/3 पाई आर क्यूब. पहले वन स्पेयर मीन्स वन लेड शॉट का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, दैट इज, एंड वॉल्यूम ऑफ कॉन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर. ये फॉर्मूला होता है, ये आपको नोटबुक में लिख लेना चाहिए. Volume of water in the cone, that is 1/3 pi r square h, because volume of it is equal to volume of cone. That is 1/3 pi, in place of radius, that is 5 into 5 into what is height? 8. Radius is 5 and height is 8. That is 200/3 pi सेंटीमीटर क्यों. अभी पहले इसको पाई की टर्म में ही आंसर हम रखते हैं. डोंट पुट पाई इज इक्वल टू 20/22/7. अब क्या करें, total volume of water flows out, that is 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. इस वॉल्यूम का 1/4 वाटर बाहर बह जाता है. दैट इज 50/3 पाई
सेंटीमीटर क्यूब। और ये जो वॉल्यूम है वो एक इन टोटल जो लेड शॉट्स है स्पेयर्स हैं उनके वॉल्यूम के इक्वल है। सो वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट दैट इज इक्वल टू स्फीयर दैट इज गिवन बाय 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 pi as it is, and radius is 0.5 into 0.5 into 0.5 on calculating. It is 1/6 pi centimeter cube. एक जो लेड शॉट है, एक जो स्फीयर है, उसका वॉल्यूम इतना है। टोटल वॉल्यूम इतना चाहिए। हमें जानते हैं कि जितना वॉल्यूम का आप वॉल्यूम के इक्वल ही वाटर डिस्प्ले होता है। That is why I use the simple formula number of the lead shot, that is the total volume of water flows out and volume of one lead shot. 53 पाई अपॉन पाई बाय 6 पाई डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 50/3 पाई डिवाइडेड बाय 1/6 पाई, पाई एंड पाई कैंसिल एंड ऑन सिंप्लीफिकेशन दैट इज 100। दैट्स ऑल फॉर योर आंसर। इसके अंदर ये 100 लेट शुड डालेंगे तो इसमें से 1/4 वाटर फ्लो आउट हो जाएगा, बाहर बह जाएगा। दैट्स ऑल। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Question number 6 on your screen. A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and the base diameter is 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. देखिए ये एक सिलेंडर है, ये एड्स, और ये इसके ऊपर दूसरा सिलेंडर है। एक पूरा पोल है जो दो सिलेंडर से मिलकर बना है। It is given that is smaller cylinder and this is larger cylinder. Height of the larger cylinder that is 220 centimeters. See, this is 220 centimeter height. And its radius is 24/2 because diameter is 24. So 24/2 that is 12 centimeter. So this is 12 centimeters. लार्जर सिलेंडर का हाइट 220 सेंटीमीटर है और रेडियस 12 सेंटीमीटर है। नाउ फॉर दिस स्मॉलर सिलेंडर जो इसके ऊपर रखा है, द वॉल्यूम ऑफ लार्जर, दोनों का वॉल्यूम फाइंड आउट करिए। वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज गिवन बाई पाई इंटू रेडियस स्क्वायर इंटू हाइट। So for the larger cylinder, that is pi as it is, radius 12 into height, that is 220. That is 9947.2 सेंटीमीटर क्यूब। इस जो सिलेंडर है, लार्जर सिलेंडर, उसका वॉल्यूम इतना है। नाउ वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, इट्स हाइट इज 60 सेंटीमीटर, इट इज गिवन, and its radius is 8 centimeter. It is also given. So find the volume. That is pi into radius square h. So pi into 8 into 8 into height is 60. On calculating, we get 12068.5 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों को ऐड कर दीजिए। So volume of larger cylinder plus volume of smaller cylinder का वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करिए, दैट इज इक्वल टू 111,532.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम है। लेकिन क्वेश्चन में ये दे रखा है इसको मास फाइंड आउट करना है, और ये भी गिवन है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम होता है। पाई की जगह हमें लेटर 3.14 पुट कर देना है। We know mass is equal to density into volume.
that is 8 into, बट अब ये ग्राम में है तो हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा. एंड वी नो दैट 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम. So 1000, 1 gram is equal to 1 upon 1000 kilograms. So divide by 1000 to convert into gram into kilogram. So that is 892.262 kilogram, and that's, or approximately 893 kilogram, approximately answer. That's all for this question. A solid consists of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter on a hemisphere of radius 60 centimeter, and is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. देखिए ये एक सॉलिड कंसिस्ट, ये एक सिलेंड्रिकल एक वेसल है. इसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन इसके अंदर एक सॉलिड ड्रॉप करते हैं जो बना किससे है? एक कॉन और एक हेमिस्फीयर से बना. देख ऐसे, ये एक स्पेरिकल पार्ट है और इसके साथ ये अटैच किया है. ये एक एक ये कौन है? ये वाला सॉलिड है, दिस वन. सॉलिड कंसिस्ट ऑफ ए कॉन एंड हेमिस्फीयर. जब इसको इसमें ड्रॉप करेंगे तो अपनी वॉल्यूम के इक्वल वाटर को डिस्प्लेस करेगा. तो बाकी पानी कितना बचा हुआ? दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉन माइनस वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फीयर. लेकिन इसके लिए हम इसके डायमेंशंस का पता करते हैं. क्या डायमेंशंस में गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है दिस इज सिलेंडर एंड दिस पार्ट इज कॉन एंड दिस पार्ट इज हेमिस्फीयर. इट इज गिवन. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. सॉलिड मीन्स कॉन प्लस हेमिस्फीयर. ये हमें चाहिए. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, बिकॉज वी नो. सो पाई as it is radius of cylinder, this radius is 60 centimeter and the height from here to here it is given 180 centimeter. कैसे हो गया 180 centimeter? See, so that is 648,000. ये 60 है हेमिस्फीयर और ये कॉनिकल पार्ट हमारा 120 है. रेडियस इसका 60 है और ये देखिए, ये कॉनिकल पार्ट 120 सेंटीमीटर, स्पेरिकल पार्ट द हाइट इज 60 सेंटीमीटर. इट इज इक्वल टू रेडियस. सो द टोटल हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज 120 प्लस 60, दैट इज 180. हमने वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया सिलेंडर का. नाउ वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. सो हाइट ऑफ कॉन 120 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर that is 180 centimeter. So the volume of total solid, that is volume of cone plus volume of hemisphere. Volume of cone is given by 1 by 3 pi r square h. 1 by 3 as it is. What is radius? 60 into 60 into what is height? That is 120.
ये इसका रेडियस 60 है और इसका जो हाइट है दैट इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करिएगा। नाउ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज गिवन बाय 2/3 पाई r क्यूब। ये इनका फॉर्मूला है, अपनी नोटबुक में आपको लिख लेना चाहिए। 2/3 पाई एज इट इज इन प्लेस ऑफ रेडियस, रेडियस तो सेम ही है। आइदर इट इज हेमिस्फीयर, द रेडियस इज 60, और it is cylinder, it is 60, it is cone, it is 60। अब आपको सबट्रैक्ट करना, आप चाहो तो इसको कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हो। अब मुझे टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मीन्स कॉन प्लस सॉलिड, मीन्स सॉलिड इज कंसिस्ट ऑफ कॉन एंड हेमिस्फीयर, ऐड करिए और दैट इज दिस। अब पानी कितना बच गया इसके अंदर से देखिए, वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सॉलिड से कैलकुलेट कर लीजिएगा। 648 कॉम, ये आप पाई इंटू 10 रेज टू दी पावर कॉमन लीजिए, 3 कॉमन लीजिएगा। ये सेंटीमीटर क्यूब है। नोट करें, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यूब को हमें मीटर क्यूब में कन्वर्ट इसलिए करना पड़ेगा कि बहुत बड़ा लेंदी लार्ज वैल्यू हो गया है। कैसे कन्वर्ट करते हैं, सी हाउ टू कन्वर्ट सेंटीमीटर क्यूब इनटू मीटर क्यूब। वी नो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 1 के 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दीजिए। अब सेंटीमीटर क्यूब को 1 मीटर क्यूब में कन्वर्ट, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए इससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। दैट इज 1.131 मीटर क्यूब। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। मैं BL शर्मा, मैथ्स। स्पेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलिंड्रिकल नेक। देखिए इसको विजुलाइज करते हैं, ये सिलिंड्रिकल नेक है, वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। सो रेडियस हो गया 1 सेंटीमीटर। सी दिस इज 2 सेंटीमीटर, दिस इज हाइट इज 8 सेंटीमीटर और ये डायमीटर 2 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज रेडियस? सो रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, लेकिन ये इसका नेक है। ये किसके ऊपर है? ये टिका हुआ, दैट इज ऑन स्पेरिकल, स्पेरिकल पार्ट 8.5 सेंटीमीटर, दैट इज सिलिंड्रिकल नेक। ये स्पेरिकल पार्ट देखिए, ये स्पेरिकल पार्ट है, ये वही है जिसको सुराही कहते हैं। देखिए ये इसका डायामीटर है 8 सेंटीमीटर, that is 8.5 centimeters. So what is radius? Half of it. So radius will be 4.5 centimeters. वॉल्यूम चाहिए, ये कहता है कि इसका वॉल्यूम 345 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। क्या ये करेक्ट है? पाई की जगह वी हैव टू यूज 3.14 इन प्लेस ऑफ पाई। Volume this vessel, that is volume of cylinder plus volume of sphere, that is you have to put the formula. In place of capital R put 1, in place of small r put 4.25, in place of H you put H 8। and calculate the answer, calculate it।
ये आंसर है 346.5 सेंटीमीटर, लेकिन गिवन है 345 सेंटीमीटर क्यूब। अप्रोक्सीमेटली तो करेक्ट है, लेकिन एक्चुअली इट इज नॉट करेक्ट। तो बच्चों ने ये जो इसका वॉल्यूम कैलकुलेट किया वो करेक्ट कैलकुलेट नहीं किया, यही इसका आंसर है। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।